मान लो ये एक चार्ज चार्ज स्फीयर तो इसमें है क्यू चार्ज इसमें प्लस क्यू कंडक्टर के अपर सरफेस में ऑलवेज चार्ज रहता है प्लस चार्ज so plus q charge is distributed over the area whole area and this is the center radius of the sphere is capital R charge is q now we are going to derive potential at a point out of the surface of the out of the sphere and low the point is here say point is p इस पॉइंट में पोटेंशियल निकालना है लाइन को और थोड़ा बड़ा कर देते हैं हम अब देखो say the distance of p from the center O is smaller and radius is capital R. अच्छा हम क्या जानते हैं हम लोग अगर एक पॉइंट चार्ज होगा से कैपिटल Q from this charge at a distance of small r at this point potential V equal to क्या है K K means 1/4 pi epsilon naught this charge into positive unit charge this into this K into 1 into 1 को लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता by distance R KQ by R similarly हम एक Gaussian surface ड्रा करते हैं centering the center of the sphere draw a Gaussian surface around the sphere at a distance of r from the center small r तो Gaussian surface के अंदर चार्ज कितना है स्मॉल q अकॉर्डिंग टू गॉस इस चार्ज को हम इस चार्ज सेंटर में है ऐसा हम मान सकते हैं तो क्या हुआ चार्ज अब कहाँ पर है सेंटर तो क्या बोला था अकॉर्डिंग टू गॉस इस चार्ज को हम यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं नाउ एट दिस पॉइंट P पोटेंशियल क्या होगा V इक्वल टू K that means 1/4 pi epsilon naught this charge into positive unit charge according to definition यहाँ पे बहुत दूर से यहाँ पे पॉजिटिव यूनिट चार्ज को लाने के लिए जितना वर्क होगा वही होगा पोटेंशियल तो यू नो दिस वर्क इज यूनिट चार्ज को लाने के लिए जो वर्क होगा वो है K दिस चार्ज इनटू दिस चार्ज Q इनटू 1 by डिस्टेंस तो क्या आया पोटेंशियल एट P K small q by R
अब देखो, अब सरफेस के नियरेस्ट पॉइंट में और सरफेस में अगर पोटेंशियल निकालना है तो पॉजिटिव चार्ज को यहाँ पे लाना होगा इन्फिनिटी से। मान लो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे है, तो डिस्टेंस क्या होगा, कैपिटल आर, रेडियस। देन पोटेंशियल एट द सरफेस विल बी के स्मॉल क्यू बाई, पहले था स्मॉल आर, दिस डिस्टेंस आपका वेयर निकालना है पोटेंशियल सरफेस में, तो डिस्टेंस क्या है, कैपिटल आर। अब मान लो स्फीयर के अंदर से at a distance of small a here, at a distance of small a here, we have to find potential, electric potential due to the charge over the sphere. Then what to do, क्या करना है, we know inside a conductor field intensity is 0, that means E equal to 0, again E equal to dB by dr और dx, जो भी होगा डिस्टेंस जो होगा वो लिखना चाहिए। अगर डिस्टेंस y होगा तो y लिखो, r होगा तो r लिख गया, डिस्टेंस में वेरिएबल डिस्टेंस r मान लिया तो r लिख दो, माइनस डी वी बाई डी आर, फॉर्मूला क्या है, इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर इक्वल टू 0, therefore dv इक्वल टू 0 इंटू डी आर, 0 इंटू डी आर। अब देखो, देन dv इक्वल टू क्या आया, 0, चेंज इन पोटेंशियल इज 0। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ dv इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। यहाँ पे देखो लिमिट कैसे लेंगे, लिमिट ले नहीं सकते, यहाँ पे तो लिमिट नहीं है, जो यहाँ पे ही करना है, अंदर में करना है। तो देखो विदाउट लिमिट अगर करते हैं तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट अप्लाई करना पड़ता है, तो इंटीग्रेशन ऑफ dv इज v इक्वल टू c ओनली। तो इससे क्या समझ में आया, स्फीयर के अंदर पोटेंशियल है बट कांस्टेंट, तो ये कांस्टेंट जो है वो क्या है वैल्यू, अब जाना पड़ेगा डेफिनेशन में। अब डेफिनेशन में जाते हैं तो क्या होगा, देखो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन the work done to bring a positive unit charge from infinity to that point is the work, this work is the potential, electric potential at that point। अच्छा, अब देखो इन्फिनिटी से पॉजिटिव यूनिट चार्ज को यहाँ पे लाते हो अप टू दिस सरफेस, कितना वर्क किया, अप टू दिस सरफेस कितना वर्क किया, W इक्वल टू पॉजिटिव यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से सरफेस तक लाया, कितना वर्क हुआ, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन सरफेस का पोटेंशियल क्या था, सरफेस का पोटेंशियल के क्यू बाई कैपिटल आर, पहले क्या था प्रूफ कर दिया था। अब और लाओ, क्या तक लाओ, बट क्या करना, कोई वर्क नहीं होगा, क्यों, क्योंकि वो W इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट
से डिस्प्लेसमेंट फोर्स ई क्यू डी, ई इज 0, फील्ड इंटेंसिटी अंदर में फील्ड इंटेंसिटी 0 है तो क्यू इंटू डी, तो क्या होगा क्यू, हेयर क्यू इज पॉजिटिव यूनिट चार्ज, 0 इंटू +1 इंटू डी 0 आएगा। तो अंदर कोई भी वर्क नहीं हो रहा है, तो यहाँ तक लाने के लिए, और डिस्टेंस ए इधर भी हो सकता है, डिस्टेंस ए इधर भी हो सकता है, इस पॉइंट भी हो सकता है, इस पॉइंट भी हो सकता है, सेंटर में अंदर में कोई भी पॉइंट में लाने के लिए, यहाँ तक कोई भी पॉइंट में लाने के लिए कोई वर्क नहीं होता। वर्क होता है सिर्फ इन्फिनिटी से सरफेस तक लाने के लिए, वो भी KQ/R। तो यहाँ तक लाने के लिए कितना वर्क किया, सेम ही यहाँ तक किया, बाद में नहीं किया। तो अंदर inside the sphere, at any point inside the sphere, at any point inside the sphere, at any point inside the sphere, potential V equal to वर्क डन के समान होगा ऑन यूनिट चार्ज। क्या होगा, सरफेस तक जो वर्क हुआ वही KQ/R।